So transgenders are said to be demigods, and they still are. Can you like tell me something about the history of where it's coming from and what is it? Comes with a lot of history, but our history is never written in books. You'll hardly find them. Yeah. Through Sri Ram. Okay. Because when he went out of Ayodhya for that 14 साल का वनवास, एंड उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि जितने भी मतलब लेडीज़ एंड जेंटलमैन आप सब घर पे जाइए, मैं जा रहा हूँ फॉर माई वचन निभाने का कार्यक्रम एंड एवरीथिंग. एंड देन लेडीज़ एंड जेंटलमैन बोला था, तो जो लेडीज़ एंड जेंटलमैन नहीं थे वो वहाँ पे रुके थे. 14 साल बाद व्हेन राम केम इन टू अयोध्या, ही सॉ अस वेटिंग देयर एंड ही वाज happy with our affection or love or devotion towards him, and that's when he granted us with that boom. So Kinnars were the first people who also took badhai and also who blessed Krishna when he was born. Okay. हाँ. So Kinnars were the people who also जिन्होंने कृष्ण की भी बधाई ली है. And then you have Shiv, who is in his half male and half female form, the Ardhanari Natishvara, that form, and many things like that. So it started from there. Introducing Nandini, a talented actor with a diverse range of work. She's a dedicated storyteller with an immense talent in acting, and she has also made an impact in the world of acting and the LGBTQ community. Welcome to So What's Next, Nandini. I'm really happy to have you here. Thank you so much. So, what do you think of Pride Month in the first place, and like where does it come from? This is from my knowledge because I don't know the history of Pride Month and where does it come from, and you know what is it right now as well. So, can you tell me something about that? So I'll tell you a very funny thing. I used to work with a very prestigious hotel. Okay. I was the marketing and PR manager for that particular hotel, which is situated right near the airport. And it is very pro LGBT and everything, which is good. And we were working, or maybe as a marketing manager, we were setting up certain activities during the Pride Month. And the posters which came out from the corporate team, everything which was written about Pride Month was all about how people in USA have struggled. वहाँ पे क्या हुआ था, you know, stone wall, whatever, you know, जो भी है. But people of India need, I mean, we do not have someone who's inspirational. Today we see so many people, so many trans people, so many gay men who have started a journey. Like if you talk about the trans community, there is Lakshmi Narayan Tripathi who has started a journey. There's so many other people, you know. If you go on YouTube and if you see Project Bolo, you'll find number of series where, you know, all these people of our own country have worked so hard towards our freedom. You know, and I think we should celebrate them and we should showcase them in the Pride Month. But you know, that's not like celebrated enough because people don't know about it in the first place. Because people don't talk. Exactly. Because people who are in power, they want that entire westernized concept of Pride Month. And where does this westernized concept actually come into the minds of people like us, you know, like the general public? I think it's not cool. Anything Indian is not cool. Yeah. I feel that. You know, if you वो जो अभी नया गाना निकला है Zihalem इसकी, the remix version, the new version, जो उसका पहले वाला version, that is so sweet, such a melodious song, but people won't listen to it. You know, and people would listen to this. It's not sexy enough. It's basically not sexy enough. So whatever is sexy, they would listen to it. Right. But don't you think like whatever is coming from the US and whatever there is in India, people won't know about the Indian stuff because there are not a lot of Indians talking about it in the first place. I agree. Right. With that, so what is that like? How can people change that in the first place? I mean, I think people who are in a position of power, they should change that. Okay. With me saying it, it won't change. Do you support the Pride Month? No. Why? No, the westernized concept of Pride Month I don't support. What is the westernized concept? The same, na? Like I mean, talking about what happened in Stonewall, how drag queens ka baal wigs were pulled off, how men struggled. I mean, it's okay. It was वो शुरुआत थी. पर यहाँ पे भी तो किसी ने शुरुआत की. Mr. Ashok Rao Kavi, you know, he started. He has faced so much of struggle during, you know, when he came out as gay person. And the first Pride was done in Kolkata. Then the Mumbai ka first Pride. You know, when I was working with Humsafar Trust, I used to meet all these senior veteran people, and they used to tell me how difficult it was for them even to host that Pride event. So according to you, when like during the month of June when people like celebrate, I don't go out. You know? But then what have like you observed with people? Like what do they view Pride Month in India as? Exclusion of trans people. Why? Exclusion of hijras. I would not say trans people. Okay. So I come from the hijra community. You will see me every day morning begging on the streets, begging in the train, or maybe doing sex work in the night.
I come from that community. So whenever we go to certain events, all these events are so. First of all, people are so classist in a way, and way Hijra speak today. You're speaking to me because I can speak in your language. I Yeah. can communicate in English. Correct. And but many people from my tribe are not so privileged to communicate in this language. True. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है. सो व्हेनेवर यू गो इन दीज प्राइड इवेंट्स, इतना क्लासिस्ट एटीट्यूड होता है. सी, दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड आई नो दैट इज ट्रू इवन No, इफ that's actually very true, because if is- someone is not able to speak in English, they are automatically viewed as एंड someone. ट्रांस पीपल आर लाइक ये क्या बोलते हैं उसको, शो पीस नहीं होता घर के अंदर हाँ, दिखाने के लिए. हाँ. तो वैसे होता है कि 4 ट्रांस पीपल, एंड ट्रांस पीपल सो भोला भाला ना, उनको 4 कैमरा दिख गए, दे आर हैप्पी कि हाँ हम कैमरा में आ रहे, पर उनको पता नहीं कि हाउ पीपल आर यूजिंग देम बाय शोकेसिंग देम. You know, interesting thing that you spoke about using trans people. A lot of corporations do that, They do that. right? And don't you think it's like very, very wrong? Like, for example, I'll tell you this. So in the month of June only, during Pride Month, Saudi countries, the companies that are in Saudi, they won't use the pride flag and all. But the same companies and all the other countries use the pride flag to, like support trans people and LGBTQ in general. Right, which is very like, it's very two-faced, like in some countries you're supporting that, but in some you aren't. I mean, leave about countries. I mean, let's talk about our own country. Yeah. When this entire trend came up कि Uber के change हो गए, कार रेनबो कलर्स के हो हाँ, गए, हाँ, हाँ. कार फिर मैप का रूट रेनबो कलर का हो हाँ. गया, उससे क्या फर्क पड़ा Like, है? what is- कितने लोग उबर में काम कर रहे जो ट्रांसजेंडर्स है. True. And see, now I know anyways you'll come down to employment, and employment is such a big deal, but how will a trans person will even work in office? Your offices are not safe. People have misconceptions about you, and my community has misconception about these people. Right. ठीक है, and then there's problem with sensitization, there's problem with safety, and there's problem with payment and leaves also. Okay. It's a vast topic, very difficult So topic. from a third person view, like, people don't think of so much. Only if you pay me and I'll do a sensitization, then you'll understand. Exactly. It's a big thing, to hire a trans person, because see, if you beg in a day, 200 रुपये आ जाएगा, 200-300 रुपये में 2 बार ट्रेन मांगूंगी, हो जाएगा मेरा. मतलब मैंने अगर अभी मैं ट्रेन मांगने गई तो रात तक मुझे 200 रुपये मिल जाएंगे, जिससे मुझे कोई HR का टेंशन नहीं है, जिसमें मैं अपने मन से जा सकती हूँ, लीव ले सकती हूँ, बुखार है तो मैं घर पे बैठ सकती हूँ. हाँ. महीने का अगर मैं कम से समझो मैं 6,000 कमा रही हूँ, महीने के 6,000 कमा के खुश हूँ मेरे लाइफ में. वैसे भी रूम हम लोगों को कोई देता नहीं है रहने के लिए, लैंडलॉर्ड जल्दी एग्री करते नहीं है, रहना तो वही झोपड़पट्टी में जाके, ठीक है. वो झोपड़पट्टी का भाड़ा हम लोग कहीं ना कैसे कर लेते हैं. जो बेचारी ट्रांसजेंडर रोड पे भीख मांग रही है, जिनका 200 कमा रही है, वो अपना नींद चैन सब तोड़ के रात में सेक्स वर्क करके और पैसे कमाएगी और पैसा भर के रेंट ही देगी. But ये सब सिर्फ हाईलाइट नहीं होता है इंडिया में. ये सब हाईलाइट हो चुका है ऑलरेडी, बट प्रॉब्लम है ना कि ये सब चीज़ों की तरफ काम करना बहुत ज़रूरी है. एंड उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज करना जरूरी, एंड नॉट ओनली फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, ऑल्सो फ्रॉम माई ओन. No, from the people in general as well. क्योंकि like the way I look at it, people might know about these problems. Like, I didn't know about these problems in the first place, but even the people who know about these problems, for them, like, are they also doing something about it? सी, इफ पीपल जिनको चेंज नहीं होना है उनको हम हेल्प नहीं कर सकते. हाँ, ठीक है, जिनको चेंज नहीं होना उनको हेल्प नहीं कर सकते, और लोगों को है ना टाइम लगेगा यार जॉब पे आने के लिए. ट्रांसजेंडर पीपल विल टेक टाइम टू कम ऑन जॉब, बिकॉज वो इतने साल से जो ट्रस्ट नहीं है, वो ट्रस्ट एक दिन में बिल्ड नहीं हो सकता है. सो लोगों पे ट्रस्ट करने के लिए टाइम लगेगा. साथ में जितना टाइम ये ट्रस्ट लगने के लगेगा, उतनी देर में अगर corporates will come ahead, and if they do something for them, like not only giving jobs, we do not want jobs which will be in an AC cabin. If I'm working in this studio, I could just clean your room. That's also a job. Right. A housekeeper, I can clean that, or anything. Right. I mean, why don't you get a transgender and train them about how to do a podcast and let them do a podcast? Yeah. You can also do that. So lot of such stuff. बोलना आसान होता है, करना करता बहुत कोई मुश्किल नहीं है. है, because there's still prejudice against और अगर आप कर रहे हो और सामने वाला सपोर्ट नहीं दे रहा है, तो फिर आपकी गलती नहीं है. हाँ. मतलब if you are taking an initiative to train them, Yeah. and if the सामने वाला person is not showing interest, not showing an interest, and not able to show interest because of various circumstances, are two different things. Yeah, but now let's say even if you're like working with someone, like a company is training you everything, so you work in media and entertainment, you're an actor. I stopped working. I left my job. Right now I'm not working. It's been a year. Okay, so you were working, but would you say that even that industry was like very welcoming towards you?
It has to be welcoming. It Because has I demand respect wherever I go. Okay, but that's not the case. Like, so I work in finance, and I know if tomorrow a trans person comes in finance, I know for the fact they won't be looked at the same way like any other person. For that, your management has to sensitize entire office. Right. And and first discrimination happens when we enter in the gate. The security guard does the first discrimination. Exactly. आप लोग तो बहुत बाद में आते हो, हाँ, you know, because we all are so called privileged, पढ़े लिखे, literate. But we are actually the ones who are like the most. हाँ, पर illiterate. सिक्योरिटी गार्ड को कैसे ना, सिक्योरिटी गार्ड को भी हमको मनाना पड़ता है क्योंकि वो पहले ही देख के बोलते हैं कि आप एंट्री मत लो, आप चले जाओ बाहर. वो होता है. तो सिक्योरिटी गार्ड से सेंसिटाइजेशन, फिर मैनेजमेंट लेवल, एंड देन द वर्किंग जिनके साथ काम करने वाले उनके साथ. And then, like, has there been any discrimination in terms of work given to you? No. Never? No, I was very happy. My managers were very strict with me. Okay. हाँ, and I like that. They never thought कि अरे नहीं, she is a transgender, we should उतना काम नहीं. मेरे से बहुत काम करवाया. But have you like seen this with other people? I was the only one in that entire office, at least working in the marketing department. Okay. हाँ. Okay. Okay. So I've not seen other people, and because I was also I was assistant manager, so my level was also थोड़ा ऊपर. Right. जो हाँ. F&B services में जो waiters है, उन लोग कभी इतना मुझसे मतलब मस्ती वस्ती discrimination I never faced. Right. So when you even look at some activities or events that happened during the Pride Month, like, what do you think of it? Nothing. You don't like care. It's good for people who want to start their journeys. Because I also started my journey from there, where whenever we used to get shows, you know, I'm an actor, writer, so I started my journey from there. So we used to perform, not in the Pride Month initiatives. Yeah. There were other independent production companies which used to hire us. Right. So I've worked with them. I've done less work in the community, but more work with the mainstream. Okay. Oh, that's good then. Multiple Like, there's ads, basically like it's moving, it's progressing, but it's not there yet. And it's better to work with the mainstream. Okay. You're connected, you get more contacts, etc. Fair. So this comes from a personal place in my life. One of my best friends is he's bisexual, and he has problems like finding other people in the community or someone, you know, Finding like for what? Love or love, sex? yeah, love or sex, anything. Okay. So I want to ask you that, like, has it been like that for you as well, or is it like, do you think it's easier or difficult to get love or like relationships, sex, or anything? I don't think you will get love आज के टाइम पे. It's very difficult. क्यों? And especially transgenders को मैं एक ही बात बोलती हूँ, मतलब I had a friend, she works for a very proclaimed political party. Okay. She was upset, and I met her, and she told me, you know, she told me as an elder sister, she was like, you know, Alize, whatever you do in your life, never fall in love. Why? Because transgenders के लाइफ में एक है मतलब बोलते हैं ना, इनविजिबल रूल है हमारा एक, कि you don't expect love from anyone. Okay, why is that? It's I mean बहुत सच है यार. मतलब लड़के, मैंने बहुत अजीब अजीब लड़के देखे हैं यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेक्स के नाम पे जो लव का शुगर कोटिंग करके आते हैं, वो तो एक पीस है, वो तो आपको रोड पे भी मिल जाएंगे. ठीक है, मैं आपको पसंद करता हूँ, बट आप लॉन्च पे चलो, वो एक है, वो पीस चल जाता है. जो बंदा सामने से आके बोलता है ना मुझे सेक्स करना है आपके साथ, वो भी चल जाता है. यू पे मी, आई कम विद यू, हमारा काम खत्म, 1 घंटे बाद तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते पे. जो प्यार का वो करके आते ना, उनसे प्रॉब्लम है. फिर कुछ ऐसे भी है जो प्यार व्यार करेंगे और वो लोग काम नहीं करेंगे, उनको पालने पोसने वाले हम हैं. ऐसे लोगों को भी देखा है, लिटरली, जो ट्रांस लोग के कमाई पे पलते हैं. Really? बहुत लोगों को देखा है. How do you like find these people? Not find, I have seen them. I've seen so many of my friends जो अपने बॉयफ्रेंड्स को पालते हैं. So I have heard so many stories जो अपने बॉयफ्रेंड्स को पालते हैं. Wow. You know, कितने लोग हैं जिन्होंने सेक्स चेंज जेंडर अफर्मेशन सर्जरी कराई है सिर्फ लड़कों के लिए, क्योंकि उनको करवाना था. जब उन्होंने वो करवाया तब वो उनको छोड़ के चले गए. कितने लोग हैं जिन्होंने इतना सारा पैसा उनको दिया है, खिलाया है, पिलाया है, एंड लास्ट में उसने उसको दिखाई दिया कि तू एक हिजड़ा है. तो जब वो पहले से ही पता था ना भाई, आपको तो छुपा के पर्दे में तो रख के प्यार नहीं किया था. तो ऐसे भी लोगों को देखा है. बहुत कम लोग होते हैं जो यू नो सीरियसली like genuine connection love, करते हैं. right? So more or less it's like nothing. हाँ, it's nothing. And it should not be given that importance in a trans person's life. What a transgender person should focus in their life is all about how you will go ahead in your life. Okay.
career wise या फिर पैसा wise. But doesn't that affect your mental health? Like when you go back home, that See, now I have accepted that, so it doesn't. For people who don't accept it, उनको affect होता होगा. The मेरे mind में clear है. Like you are headstrong because you've become like that. हाँ. Okay. I mean, I was dating a guy. हाँ. And I know कि वो एक ना एक दिन एक औरत के पास ही जाने वाला है. तो मैं उसके पीछे इतना पढ़ूँ ही क्यों? It's okay ना, जब मिलता है तब बात करो, नहीं मिलता है तो मत बात करो. It doesn't matter. Fair. Okay, so now I want to change the conversation to something more trending that's happening in the Western world. So basically, a lot of transgender people have been like coming in women's sports, right? So because of that, a lot of people have a problem because they have an natural advantage over women in terms of sports, and that's how like they're winning everything. Who, trans people? Yeah. How they have a natural advantage? I don't know, but they're winning. Exactly. Where? In which country? So in foreign ना? Yeah, Europe and US यहाँ पे हम mainly. लोग को ऑफिस में जाने नहीं दे रहे, तुमको लगता है स्पोर्ट्स में वही मिलिट्री में तक जाने नहीं दे रहे. हाँ, मेरे को इसलिए about us, they are not allowing cis gay men to go in military. What they will allow us? Exactly, but it's not about here now. It's about the world now. Like basically globally, जब this is घर के happening. आंगन में इतना कूड़ा पड़ा है तो बाहर देखकर क्या फायदा? No, but this is something happening, right? And so that this brings me to the first point, that because of the Western culture, a lot of things are like influenced here. So maybe looking at that, this might come here. No. No? They do not want trans people to come in that kind of positions. Why? To each, I mean, उनके मन में क्या है, उनको literally मुझे लगता है उनको सबको बिठा के उनकी प्रॉब्लम जाननी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है आपको. But ये फिर चेंज कैसे होगा? बात करने से. बट बात तो करनी नहीं है. वही तो उनका प्रॉब्लम है, हम तो रेडी है बात करने के लिए. बट फिर then तो it's a loop ना. I mean, leave sports, just see give the reservation which they gave for joining the police, Maharashtra police. How many trans people are there? 2-3 बार प्रोटेस्ट हो चुके, फिर भी कुछ नहीं किया है. हाँ, like but प्रोटेस्ट से यूजुअली हुआ कहाँ है कुछ इंडिया में? यूजुअली कुछ नहीं होता, उसके अलावा करेंगे क्या और कैसा और किस तरीके से हम गवर्नमेंट तक पहुंच पाएंगे? सी इफ वी क्लैप, तुम बोलते हो कि तुम सुधरते नहीं हो, तुम लोग ताली बजाते हो, ठीक है, चलो अभी ताली नहीं बजा, एकदम साइलेंट प्रोटेस्ट किया, फिर भी तुम नहीं दे रहे हो, तो अब और करे क्या? अब नंगे होंगे तो बोलेंगे इंडिसेंसी है, फिर तुम जेल में डाल दोगे. सो आई मीन व्हाट टू डू? That's fair. It's a fair point. सी मुंह पे बोल दो नहीं देना है. हाँ. मुंह पे बोल दो नहीं देना है, देन वी नो हाउ टू गेट इट. क्योंकि अकॉर्डिंग टू नालसा जजमेंट एंड इवन द ट्रांसजेंडर बिल विच वाज पास्ड, उन्होंने क्लियरली बोला है कि ट्रांसजेंडर पीपल शुड गेट रिजर्वेशन, छोड़ दो पर इक्वल राइट्स इन एवरी डिपार्टमेंट. अरे वो तो वो भी नहीं दे रहे हो तुम. But do you think Indian government has done anything? Indian government is not doing anything. Never done anything. We have been right? allocated only 0.2 crores का budget this year for trans people. शेल्टर होम्स में खाना नहीं है, बाहर से वो लोग रेशन मंगा रहे, डोनेशंस के थ्रू रेशन. तो गवर्नमेंट कर क्या रही है? Why does शेल्टर होम्स आर नॉट सेफ. दिल्ली के शेल्टर होम में 3-4 बार अटैक हो चुका है ट्रांस लोगों पे. Why doesn't like nobody talk about this? If people are so like into It like is not Pride Month and highlighted. all that, It you're is like, not highlighted enough. Exactly, right. It's not. I mean, leave that. How do you even think? I mean, don't you think that transgender people would also get raped? Yeah. हाँ. Yeah. कंप्लेन देखा है कभी? नहीं, वही तो ना. कभी नहीं देखा. कोई बात ही नहीं करता. But this is like, so this is firstly it's very two-faced because so I got to know about these problems now because I honestly didn't even think of it, you know. And now when I even hear of it, it's like if you're in the month of June, everyone's so pride, and throughout the year also everyone's so celebrated. Exactly, na, like I don't celebrate. You know, so if people are talking about that, it is basically, you know, I'll tell you, Pride Month में celebrate इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि कैसे इंडिपेंडेंस डे के दिन सबका पेट्रोटिज्म कहीं से तो उठ जाता है. You know, everyone starts to wish you Jai Hind, Jai Bharat. Yeah. I know my country is great. I love my country. एक दिन तुम इतना बड़ा करके क्या करने वाले हो? सेम विथ प्राइड मंथ ना, 1 महीना तो तुम यूज़ करने वाले हो हमको. हाँ. और उस 1 महीने में भी तुम हमको पैसे नहीं दोगे. तुम हमको बुलाओगे तुम्हारे इवेंट्स में कि हम आके अपनी ज़िंदगी की दुखद कहानी तुमसे शेयर करें, तुम्हारे एम्प्लॉयज़ को ये करे वो करे, और तुम दोगे क्या? कुछ नहीं. पैसे भी नहीं दोगे. हमारी दुखी कहानी भी सुनना है, छापना भी है उससे तुमको पैसे. It's not easy to talk about your own life story and put it in front of such a large number of people. You know, it's not easy. You have to go through all those emotions 10 बार, फिर उसको जाके सामने बताओ. It's not easy. That's true. It's tough. So even if you're calling us, even if you're using us for the Pride Month initiatives, at least pay. But they don't.
I mean, I am saying at least pay. नहीं pay करते से बोलो, at least pay. What do you think is the future then? Like don't आगे know. क्या होगा अगर इतना अभी है and awareness भी नहीं है अभी तो इतना. नहीं awareness काफ़ी है. इसके बारे में. हाँ, किसके बारे में? पे के बारे में. Pay everything. Rapes, pay, police. Rapes के बारे में यार सबको पता है पर किसी को बोलना नहीं है. ठीक है. एंड ट्रांसजेंडर्स भी बोलेंगे नहीं क्योंकि हम लोग को भी पता है कि पुलिस कंप्लेंट लेगी नहीं. हाँ. ठीक है. तो बोल के फ़ायदा ही क्या है? एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो बोल के चीख के थक चुके हैं. Basically, general public won't know. Like there will be few people, or there will be they like know, but maybe they don't want to talk about it. Yeah. Okay. क्योंकि फ़र्क ही नहीं पड़ता ना. तो फ्यूचर कहाँ है फिर? फ्यूचर अभी हम डिसाइड करेंगे क्या होगा फ्यूचर. देखते क्या कहाँ से क्या जाएगा. And when do you think, like any idea? No idea. You can't predict future. You never know. कल के कल चेंज हो जाए. कल क्या पता 14 ट्रांसजेंडर्स को बोलो पुलिस में भर्ती करा ले. You never know. Fair. सब लोग अपने अपने लिए लड़ रहे हैं. हम लड़ रहे हैं. आई एम एन एक्टर सो आई एम फाइटिंग इन माई ओन वे. राइट. गिव अस बेटर रोल्स, गिव अस बेटर पेमेंट. सैनिटाइज योर, आई मीन सैनिटाइज बोलो, सैनिटाइज तो सब है. सेंसिटाइज योर क्रू, यू नो. सो लॉट ऑफ स्टफ. You're working towards it. And like, do you think transgenders or LGBTQ in general, in tier 1 cities it's still accepted, but do you think in tier 2 or tier 3 cities it's tough for them? It's tough for there, it's right? Extremely tough for them. Have you like seen, has no, anything happened? इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि I'm actually very lazy, but I would love to meet transgender people from the rural areas. Okay. मुझे मिलना है. I want to learn how they live, how tough it is for them. In terms of your work also, can you tell me some of the instances that if you've shared or if you have been through something at work or in getting work because you're a transgender person? So I'll talk to you about casting directors. Okay. They want a transgender, but then they want a transgender who doesn't look like a transgender. It's not possible. It's only possible if you have a good doctor or you're really blessed by doctor. Or you have a lot of money. Or you're blessed by God, sorry. A good doctor or you should be blessed by God. भगवान ने तुमको ऐसे बनाना चाहिए कि यू शुड लुक लाइक अ वुमेन. पैदा होते ही ऐसे एक औरत जैसे निकलो, जवानी में भी तुम औरत दिखो. अगर वो नहीं है तो यू शुड हैव लॉट ऑफ मनी एंड यू शुड गेट अ गुड डॉक्टर. तभी यू कैन लुक कम्प्लीटली लाइक अ वुमेन. But apart from that, most of the people don't look like women, and that's exactly the beauty right. of being transgender, that you don't look like women. You're an amalgamation of both beautiful things, and you should appreciate that. And जिसको कराना है, who wants to go through those surgeries, it's okay, go for it. But casting directors को ये पता चलना चाहिए कि 90% तो है ही नहीं यार. कहाँ से ढूंढ के निकालो. Still you want us to be in those beauty standards set by your society. ये ट्रांसजेंडर तो पूरी लड़की जैसे दिखनी चाहिए. फिर तुम बनाए क्या रहे हो? फिर सेंस ही नहीं बनता उस चीज़ का. If they hold the power, so do they tell you to change some things about yourself? No, they don't. They don't? They don't. Like it's accepted then? क्या कहाँ पे? Like if they want you to look like something or someone or change something about yourself. The casting directors? Yeah. No, they would find someone else. They would find someone. Usually they get? हाँ, they get. Okay. मिल जाता है यार. मुश्किल है हर जगह पे. कहीं ना कहीं से हो ही जाता है. नहीं यार, मेरे को honestly पता नहीं था इतना. Like मीडिया में तो बहुत टफ है. Yeah. हाँ. I thought the other way around, you know. No, media में बहुत tough है, especially in the film business, showbiz. Yeah, I thought it's easier there. No, I thought it's tougher in other industries. It's tough. चलो एक बार तुम select भी हो गए. Like I was working for this web series which will release on Mini TV. The crew was not at all sensitized. First of all, when a transgender person walks on your set, you behave like कि alien आ गया है office में, या फिर alien आ गया है set पे. कौन है? तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है. फिर आप उसके अराउंड ऑर्बिट में आप घूमते रहते हो कि क्या कौन सा ग्रह है, देखते जाओ. फिर आप हंसते हो. तो ऐसे टाइम पे मैं जाके वैन में बैठ जाती हूँ. एंड मैं अपने काम को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं काम नहीं छोड़ती. आई सैट इन द वैन एंड आई टोल्ड द फर्स्ट लेडी दैट until unless those people come and say sorry to me, I am not going to work on set. You have to demand respect somewhere. They gave me a 17-page contract to sign. And वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आई विल बी सेफ ऑन द सेट. एंड इनफैक्ट वहाँ पे लिखा था कि इफ़ आई हरास अ वुमेन देन दे विल फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट. व्हाई वुड आई हरास अ वुमेन? आई मीन इट शुड बी exactly other way around. Men will harass me.
you know, by asking numbers, or maybe they'll come and they'll be like, दीदी 1 रुपया दो, मैं आपको 10 रुपया देता हूँ, मेरे घर पे प्रॉब्लम है. अरे भाई मैं भीख मांगने नहीं आई हूँ. अगर भीख मांगना तो मैं रोड पे मांगूंगी, तब मेरे को 100 रुपया लूँगी तुमसे. But is this पर very काम करने आ common? रही हूँ ना, काम के वक्त तुम क्यों दीदी को 1 रुपया देके 10 रुपया मांग रहे हो? मतलब तुम दीदी को हर जगह दिखाना चाहते हो कि दीदी आप कितनी भी एक्टर बन जाओ, दीदी आप भीख मांगने का ही काम है आपका. Shit. मतलब दीदी रिग्रेट नहीं करती, दीदी बोलती नहीं कि वो भिखारी नहीं. दीदी है, क्योंकि दीदी जब रोड पे जाती है तो दीदी को कोई बोलेगा नहीं कि दीदी इतनी पढ़ी लिखी रहेगी. दीदी को सब भिखारी ही समझेंगे, विच इज़ ओके. Hmm. कभी कभी काम आता है. समटाइम्स वी यूज़ आर सेक्सुअलिटी और अ जेंडर आइडेंटिटी इन द बेस्ट वे. Right. कभी कभी काम आता है, पर हर बार नहीं आता. स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग. तभी मतलब आई वॉज डूइंग अ मराठी फिल्म, एंड वहाँ पे से किसी ने सेट पे आके मुझे 1 रुपया दिया. मुझे बोलते 10 रुपये दो, मेरे को 1 रुपया दो. बोले अरे जा काम करने दे बाबा, लाइन याद दी. वैसे इंस्टेंसेस भी हुए. Can I ask you like one like difficult question? Like how often have men harassed you, like on the See, set or off the set? a lot of time, yeah. ऑनलाइन हरासमेंट, ऑफलाइन हरासमेंट. मेरा इंस्टाग्राम आईडी 3 बार बैन हो चुका है बिकॉज आई पुट माई पिक्चर्स एंड दे आर मतलब पूरे कपड़े में, ऐसे भी नहीं कि. And you got banned. हाँ, आई गॉट बैंड. आई पुट माई एड, मेरा HSBC का एड मैंने पोस्ट किया, सुबह उठ के देख रही हूँ पुट्स बैन. बहुत बार हो चुका है मेरे साथ ऐसे. आई एम Like, यूज्ड टू दैट. but doesn't that This affect? now I'm not interested in Instagram views, followers. I had 10,000 followers at one point of time in 2018. Hmm. I did a show, सुबह उठी बैन. सेकेंड आईडी बनाया 2 महीना बैन. थर्ड आईडी अभी बनाया था, HSBC का ऐड आया, अच्छे फॉलोअर्स बढ़े थे, सो बैन. तो आई एम यूज्ड टू दैट नाउ. मुझे मेरे नसीब में लिखा नहीं. But doesn't that affect your mental health? It does, but it's okay. If you know that you are good at something, you'll get work. And like you continue to live with that. I'm working with Dibakar Banerjee now. One of my daughter is working for him. Hopefully she'll get selected. So a lot of such stuff is happening. I just did a reality show. Hmm. So काम आ जाएगा यार, मिलने से काम मिलता है, पर थोड़ा मेहनत तो यार हर चीज़ में करनी हाँ, no, पड़ती है, that's तो true, उसका यार. तो But कुछ नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. exactly. दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ जो दे रहे हैं वो उन्होंने सही तरीके से रिसर्च नहीं किया है. Hmm. तीसरी बात ये है कि व्हेन दे हायर अस इवन फॉर स्क्रिप्ट सुपरविजन, दे डोंट पे अस इनफ, यू नो. So that's what I'm saying. Like, what general people would get Hmm. in terms of opportunities or roles or anything, trans people won't get that. हाँ, आई मीन सी ना व्हाट वी डिड विद चंडीगढ़ करे आशिकी. You wanted a Vani Kapoor to play that transgender, and if a transgender looks like Vani Kapoor, any man would fall flat, Yeah. you know. So that's the problem. Even men need to change their perspective, na. Yeah. But that's men See, don't. you also, even if you want to date a transgender person, she should look completely like a woman. मतलब तुम वो 90% को तो तुम लात ही मार रहे हो, जो 10% बचा है उसको ही प्यार करोगे. हाँ. तो 90%, don't you think they deserve to be loved? So transgenders are said to be demigods, and they still are. Can you like tell me something about the history of where it's coming from and what is it like now? See, in the Hijra community, transgender is a foreign term. Hijra community comes with a lot of history, but our history is never written in books. You'll hardly find them Yeah. written in books. Yeah. So हमारे community में से वो verbal तरीके से हम share करते हैं. For example, like if I have my daughters, so I tell them कि हम लोग यहाँ से आए थे, वहाँ से वहाँ माइग्रेट करके फिर हम यहाँ आए, फिर यहाँ से हम वहाँ आए. सो येस, द प्रॉपर टर्म फॉर ट्रांसजेंडर पीपल इन द हिंदू वे इज स्किनर. They were known as skinners, and they held a very high status in the Indian society. India, Afghanistan, and Pakistan, Nepal, Bangladesh, they had a huge amount of respect, and their entire मतलब उनको society ने इस तरह से काम दिया गया था कि wherever you will see, you know, a child's birth or a wedding, you should go and you should shower your blessings, and then you'll get the reward whatever it is, so that you could I mean तुम अपना घर चला सको उस reward से. and वो हमको मिला है through Shri Ram. Okay. Because when he went out of Ayodhya for that 14 साल का वनवास, एंड उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि जितने भी मतलब लेडीज़ एंड जेंटलमैन आप सब घर पे जाइए, मैं जा रहा हूँ फॉर माई वचन निभाने का कार्यक्रम एंड एवरीथिंग. एंड देन लेडीज़ एंड जेंटलमैन बोला था, तो जो लेडीज़ एंड जेंटलमैन नहीं थे वो वहाँ पे रुके थे. 14 साल बाद व्हेन राम केम इन टू अयोध्या, ही सॉ अस वेटिंग देयर, एंड ही वाज हैप्पी विद आवर अफेक्शन और लव or devotion towards him, and that's when he granted us with that boom.
So Kinnars were the first people who also took badhai or and also who blessed Krishna when he was born. Okay. हाँ. So Kinnars were the people who also जिन्होंने कृष्ण की भी बधाई ली है. So- And then you have Shiv, who is in his half male and half female form, the Ardhanari Natishvara, that Yeah. form, and many things like that. So it started from there, and then eventually Mughals came in, Right. you know, in India. So when Mughals came in, उन्होंने देखा कि उनके हैरम्स में इतनी सारी औरतें, तो उन औरतों को सपोर्ट कौन करेगा? उन औरतों को अगर हम जेंट्स मतलब अगर मेल सोल्जर्स की तरफ छोड़ दे, एंड बिकॉज उनका नंबर इतना ज़्यादा है, एनीवन कैन हैव सेक्स विद देम. Yeah. सो व्हाट दे डिड, दे टुक ऑल दीज हिंदू ट्रांसजेंडर्स, they converted them into Islam, they made them to accept Islam, and then they gave them legit jobs, you know. Yeah. So वहाँ पे ऐसे ग्रुप्स होते थे जो क्या करते थे, मतलब जो ग्रूमिंग करते थे क्वींस का. तो जो क्वींस के ग्रूम करते थे, उनका क्वींस को जो ग्रूमिंग करते थे उनका एक अलग डिपार्टमेंट I've होता seen था. that in movies. Yeah. फिर जो मिलिट्री में होते थे उनका एक अलग डिपार्टमेंट होता था. जो ब्लॉक्स को संभालते थे, हाँ. एक एक हैरम को संभालने वाले, उनका हाँ. एक अलग डिपार्टमेंट होता था. तो लेजिट जॉब जो हमको दिया है, जहाँ पे हमारा पे स्लिप सैलरी आता था, दैट वाज बाय मुगल्स. Okay. And We were basically वो blessed. लोग ने recognize उन्होंने किया. रिकग्नाइज किया, उन्होंने जॉब दिया. इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट में भी कहते हैं कि व्हेन मुगल्स bloody when they could employ us, and we were such a good, we were also in military, you know, transgenders were also in Yeah, military, like I yeah. said. If you see Padmavat also, उसमें Yeah. भी तुमने देखा होगा कि transgenders were in हाँ, I military. know. I told you I saw मुगल that in हैरम्स में movies. बहुत सारे इवन जोधा अकबर वहाँ पे भी थे, Yeah. इन दैट फिल्म्स. हाँ. तो वहाँ पे दिखाया है, बिकॉज येस हम लोग थे, हम लोग काफ़ी ज़्यादा हिस्सा थे, एंड दैट्स हाउ ट्रांसजेंडर पीपल स्टेप्ड इनटू सूफीज़म. दैट्स हाउ दे एक्सेप्टेड इस्लाम, एंड दैट्स हाउ दे स्टेप्ड इनटू सूफीज़म. एंड अभी तक हमारी कम्युनिटी काफ़ी हद तक वैसी है. Right. मोस्टली इट इज़ And it's still like that's why when someone is born, transgenders come Hmm. to bless them. हाँ Comes from there, like Krishna का आपने जो बोला था. हाँ, वो इट and कम्स फ्रॉम देयर, वहाँ से Okay. आता है. तो वो सदियों से वो ट्रेडिशन चलता आ रहा है. Okay. Because when Peaceful. Mughals came in and everything, it was good. When Britishers came in India, उन्होंने उनके यहाँ पे तब एक्सेप्टेड नहीं था. तब वी वर वेरी, हम लोग को वो मोरालिटी के बंधन में हम नहीं थे. वी वर क्वाइट ओपन अबाउट ऑल दीज Yeah, थिंग्स. ठीक yeah. है, रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग सबके लिए था. व्हेन मुगल्स केम इन, उनके लिए ये अजीब था. तो सॉरी, ब्रिटिशर्स केम इन, उनके लिए अजीब था. तो ब्रिटिशर्स ने हर जगह पे बैन लगवा दिया. सो फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव टू गो फ्रॉम मलाड, आई लिव इन मलाड, आई हैव टू कम टू खार टू सी अनदर ट्रांसजेंडर, मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक फॉर्म भर के देना पड़ता था. Why you want to meet? हाँ, अभी 2 दिन पहले आई थिंक तेलंगाना कोर्ट का कुछ आया है, जो बहुत पहले 1857 का कोई लॉ है, यूनक्स, सम एंटी यूनक्स लॉ. यूनिक इज़ ऑल्सो अ वर्ड विच यू शुड नॉट यूज़ फॉर अ ट्रांसजेंडर Yeah. पर्सन, बिकॉज यूनिक उसका मतलब है कि एक आदमी जिसको आप कैस्ट्रेट करते हो. तो वो हम नहीं हैं. तो ठीक है, तो वो एक गलत वर्ड है, पर वो जब का लॉ बनाया था वो अब जाके उन्होंने शायद निकाला है. Okay. Like अभी जाके 2020. अभी जाके. Shit. और वो लॉ में यही था कि हिजड़ों को बाहर घूमने मत दो. अगर वो लोग कोई, अभी हमारे कम्युनिटी में एक ये है, कल्चर है हमारा, कि हम लोग दिवाली में ना हर शॉप पे जाके हम लोग डांस करके एंड हम लोग डोनेशंस लेते हैं. एंड वो डोनेशंस हमारे घर चलाने के लिए भी उसमें से पैसे आते हैं, और साथ में हम वो पैसे से काफ़ी लड़की जो गरीब होते हैं, जो पुअर फैमिलीज़ होते हैं, उनको हेल्प करते हैं, एजुकेशन के लिए सपोर्ट करते हैं. जो हमारे पास हमारे बेटियाँ रहते हैं, उनके सर्जरीज़ के लिए वो पैसे जाते हैं. तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है. तो वो एक सेरेमनी होता है जिसको हम लोग दिवाली बोलते हैं. दिवाली में हम लोग मांगने जाते हैं. स्पेसिफिकली आप अगर कभी देखोगे तो दिवाली में आपको दिखेंगे ट्रांसजेंडर्स ढोलक लेके डांस करते शॉप हाँ. के बाहर में मांगते. हाँ. तो वो एक हमारा कल्चर है जो सालों से चलते आ रहा है. And ये जो सब discrimination का एंड ये सब point है. ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिया. हाँ. तो जो basic- हमारा बेड़ा गर्क हुआ है वो सब ब्रिटिशर्स के आने के बाद Exactly. हुआ है. Right. मतलब ये पहले ऐसा नहीं था. नहीं It's था. just that इवन विद Britishers came. गे मैन, ब्रिटिशर्स के आने के बाद तो ये सब हुआ था. 377 इज नॉट अ इंडियन लॉ. जो गया है वो भी तो हाँ. फॉरेन लॉ था. हाँ. Exactly. वो 377 इज अ फॉरेन लॉ. तो हम लोग, अगर तुम देखोगे ना, अगर तुम्हारे पास सेंस है, तुम देखोगे ये सब बहुत ओपन थे हम लोग ये सब चीज़ों के बारे में. ये सब ब्रिटिशर्स ने गू कर दिया और अभी वो लोग जाके नाच रहे वहाँ पे. But ये सब लिखा क्यों नहीं है कहीं पर? वही तो मेरा प्रॉब्लम है. ये सब दिखाओ और फिर प्राइड मंथ सेलिब्रेट करो, फिर मज़ा आएगा. फिर लोगों को पता चलेगा कि कितना प्रॉब्लम हुआ है. Exactly. आज जब लोग शॉर्ट कपड़े पहन के घूमते हैं, मतलब LGBT कम्युनिटी वाले जब शॉर्ट्स कपड़े पहन के घूमते हैं, और उनको लगता है यार क्या आज़ादी है, कितना लाइफ अच्छा है, पर नहीं है ये. बिकॉज हम लोग वो 377 जब था यहाँ पे,
जब जब क्रिमिनलाइज था तब हम लोग थे यहाँ पे. दैट टाइम आई स्टार्टेड माई जर्नी. हम लोग देखते थे कि बांद्रा में हम लोग शॉपिंग के लिए जाते थे तो बांद्रा में लड़कियों को रिस्पेक्ट देंगे शॉपकीपर्स पे. जैसे हम दिखते थे वो लोग हमको खींच के लेके जाते थे शॉप में, अरे लो ना करके चिढ़ाते थे हमको. वो सब टाइम हमने देखा है. अभी थोड़ा ईजी अप हो गया है 377 जाने के बाद, पर 377 पहले के स्ट्रगल्स अलग ही थे यार. हाँ, हम लोग ने तो कम ही फेस देखा है. हमसे पहले जो है उन्होंने तो बहुत फेस देखा है उसका. तो shit. अभी भी तो स्कैम होते हैं. कितने Scam? सारे डेटिंग ऐप्स पे लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि हम आपको पैसे देंगे, आप आ जाओ, या फिर चलो वी वांट टू हैव सेक्स विद यू, घर पे बुलाते हैं एंड फिर मारते हैं, लेकर जाते हैं. कितने सारे ट्रांसजेंडर्स को बहुत सारे प्रॉब्लम है. इवन व्हेन आई यूज्ड टू डू सेक्स वर्क, मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाती थी टू कार्टर रोड, एंड वहाँ पे मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि सी तुम आज आई हो पर अपने घर पे जाने का गारंटी मत लेकर जाना, तुम पहुँचोगी कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है. तो वो भी होता है जब हम रास्ते पे Today, देखते हैं. like, even now, आज even भी. now, आज भी अगर तुम देखते हो ना कि ट्रांसजेंडर सेक्स वर्क के लिए खड़े हैं, हमको लगता है क्या है अच्छे से तो खड़े हैं हाईलाइट बन के, फिलिप्स लाइट बन के खड़े हैं ना, पर वो फिलिप्स लाइट की ज़िंदगी अच्छी नहीं है. उसको कभी भी कोई भी उखाड़ के लेके जा सकता है. तो जाएगी तो मर जाएगी. जितने लोगों को सब्सटेंस अब्यूज़ करवा के मार डाला गया है सेक्स वर्क की जगहों पे, बहुत सारी चीज़ें. इट्स अ वेरी It's something that's हाँ, जिसके बारे में तो मैं protected. हाँ, बहुत बात करने के लिए बहुत कुछ है, पर लोग बात नहीं करते हैं. वही तो मेरा प्रॉब्लम है कि लोग ये सब चीज़ों के बारे में बात क्यों नहीं करते. जो हाँ, रियलिटी है वो दिखाओ. मतलब डोंट शुगर कोट एवरीथिंग अबाउट everything to the mainstream community. Tell them that this is the reality and don't only speak about yourself. Speak about people. I mean, see, I am privileged. I don't need to do sex work, but I don't mind doing it. I need to know I'm an actor. मुझे पता तो चलना चाहिए वो सेक्स वर्क की ज़िंदगी में चल क्या रहा है. वो अगर 200 रुपये लेके किसी के साथ सो रही है तो वो 200 रुपये लेके दिन में कम से कम वो पूरी रात में कम से कम 20 लोग के साथ सो रही है. तो 20 लोगों के साथ कैसे सो पा रही है. कुछ तो है. शी मस्ट बी ऑन सम सब्सटेंस. right. फिर वो 200 रुपये के लिए कर क्यों रही है. क्योंकि उसको बहुत कुछ करना है लाइफ में, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. Perspectives are that are not like told. पर्सपेक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी चीज़ है. क्योंकि माँ बाप को ट्रांसजेंडर बच्चे घर पे नहीं चलते, पर ट्रांसजेंडर बच्चों के पैसे से अपनी बेटियों की, अपने घर की सब करवाना वो सब चलता है. हमारा पैसा चलता है पर हम नहीं चलते. वो एक प्रॉब्लम है. कितने ट्रांसजेंडर्स है जो पता है इतना दुनिया भर का डांस करते हैं, हाँ. मेहनत करके सेक्स वर्क करते हैं, मेहनत करके ट्रेन मांगते हैं. उन लोग को घर में माँ बाप बुलाएंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर उनके पैसे बराबर चाहिए उनको, क्योंकि उनको अपना घर चलाना है या फिर उसकी छोटी बहन की शादी करनी है. और बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स ऐसे जिन्होंने अपनी बहनों की शादी करवाई है अपने उसी भीख मांगे हुए पैसे से. But were like your parents chill? माई पेरेंट्स, आई मीन, हाँ, दे आर क्वाइट चिल. They were like, आई मेड इट लाइक दैट. okay. I have one thing that I've heard from a friend. I don't know how far it's true, but it's I don't know, it's highlighted in a very negative way. That was told me last year. So he told me that if the funerals of a transgender are usually It's a fake thing. yeah. So can I finish? Like, if you can die, people, if you're a Muslim, if you follow Islam and तुम अगर कल मरते हो तो हम तुमको उसी तरह से दफनाएंगे. हाँ. वो जो है चप्पल मारते, फिर नहीं, रात नहीं, में नहीं. लेके जाते. हाँ, so the funerals, nobody has seen the funeral. Like basically वो होता है that it's usually at 4 whatever, like late at night. नहीं. And if someone sees you that you're basically a transgender is being buried. ना हम लोग को लेके कौन जाते हैं बाबा. हाँ भाई. Anyways, we are not allowed in the cremation ground. Okay. कब्रिस्तान और स्मशान में हम अलाउड नहीं है. हाँ, जो फ्यूनरल राइट्स होते हैं, मतलब अगर इफ़ यू आर हिंदू तो तुम्हें अग्नि देने के लिए तो हम नहीं दे सकते. तो ये सब चीज़ें करता कौन है. जो हमारे आजू बाजू में लोकेलिटी में रहते हैं वही करते हैं. वही करते हैं ये सब. ये इट्स अ मिथ. Exactly, right. हाँ, तो वो मेरे को खाली clarify करना था because then the moment he told me and like my friends and all, we were like मैं जब छोटी थी ना, हाँ, मुझे भी यही लगता था. और जब मैं छोटी थी मुझे खुद हिजड़ों से डर लगता था. मैं भाग जाती थी उनको देख के. आज जब उनमें आ गई तो मुझे लगता है मैं कहाँ आ गई. इट्स फन. yeah. It's a weird way to like look at it. But connecting the dots. I always wish कि even in the next birth, if it ever happens, I should be born like this. I don't want this life of a man or a woman. I don't want it. See, if I would be a cis man in my life, तो मैं कभी I would never be so well spoken. Right. I would not be where I am today. Yeah. You know, I would not even be doing this podcast with you. I would not work in 6 web series. I would not be working with so many good known people. You know,
क्योंकि मैं फिर टपोरी बन जाती। मुझे पता है मैं कहाँ से आई हूँ, मैंने अपना बचपन देखा है, मैं कौन सी एरिया में पली हूँ, वहाँ पे इन्फ्लुएंस कैसा था लोगों का, मैं नहीं हो पाती थी अगर मैं एक सिस मेल होती तो। इफ़ आई वुड बी अ सिस वुमेन तो मेरी ज़िंदगी और बर्बाद होती थी। अभी मेरे पेट में एक बच्चा होता, मेरे गोद में एक बच्चा होता और मेरे हाथ में एक बच्चा होता, और मेरी लाइफ ख़त्म हो जाती थी। सेक्सलेस, लवलेस, यूजलेस। नो को ये अच्छा है, यू गेट टू डिसाइड। इट्स, हाँ इसके स्ट्रगल्स है, ऐसे नहीं कि इसमें हर चीज़ अच्छा है, ऐसे नहीं, इसके अपने खुद के स्ट्रगल्स है ये लाइफ की, बट इट्स ओके। Yeah, like it's part and parcel of life, right? So thank you so much for doing this. This was like very heavy but very informing me, you know, like I'm much aware about what you have to deal with and what others have to deal with. And yeah, again, like thank you so much for being here.